All dear medicos, we are having the pleasure to have Dr. Sandeep with us, this FMG student who scored 177 marks in the very first attempt. So on this platform, on the behalf of DAM's family, we congrats him with a big congrats for this achievement. Thank you, sir. So beta, how you feeling? कैसा लग रहा है इस success के बाद? Sir, it's amazing, sir, because I was like very worried because in first attempt not everyone is passing, but by God's grace I passed, and with all due support you teachers gave us, and it's now I achieved it due to you only, sir. Thanks beta, thanks for all these compliments. So beta, we will be using, हम इस platform को use करते हैं, like thousands of the students across the globe, even in your medical college, in your you Yes. must be listening to you. Okay, beta, what was the strategy? Like यहाँ पे बच्चे 2 साल 3 साल में भी नहीं क्रॉस कर पा रहे, आपने पहले अटेम्प्ट में क्रॉस कर लिया, तो what was a game Sir, changer? मतलब game changer क्या था? Sir, it was like, sir, consistency only. Sir, because being consistent is more important than doing hard work. Because if I am studying like for 7 days, I am studying for 12 hours. But after 7 days, if I will relax for 3, 4 days, then it's nothing. Absolutely. And sir, I will suggest everyone my juniors, that they should listen to the faculties, because though the points you are telling us, we should follow those. If we are following those things, nothing is much tough or anything. So beta, like you are passed out from which college? So, Kyrgyz State Medical Academy, Kyrgyzstan. Or in the very first attempt, you managed to cross this 150. Yeah. Yes, sir. So what was the strategy like? Like you when you joined us in matlab, like when you Yes, sir. joined hospital? I joined DEMS in 2018. Okay. One of my seniors, Dr. Shirish Pandey, he is my senior. He Okay. suggested me to join DEMS, and with his support and all teacher support, I continued learning from this platform. And in the last, DEMS also gave me free subscription of eMedicos for 6 months, due to because I participated in a quiz and I scored well. So the team was constantly supporting me from last 5 years. That's great, beta. So when you started, like in the medical college, you started this preparation for FMG Yes, sir. examination in the third year, Yes, finally. sir. So from second year, I started the preparation. तो बेटा क्या आपका सेकंड ईयर में क्या था, मतलब आपने कैसे यू प्रिपेयर योर नोट्स और व्हाट वाज द स्ट्रेटजी सर बिहाइंड सर सेकेंड ईयर में सर मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मुझे पहले बेसिक्स पर फोकस करना था अपने. बेटा? And I started focusing on like anatomy, physio, biochem, anatomy by Dr. Sandeep Madan sir, and all those things. And so I followed the strategy which DEMS gave me. I was just following, and that's. तो बेटा आपने सेकंड ईयर में आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर की नोट्स बना लिए थे कंप्लीट? जी सर, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, टीचर्स को फॉलो किया था, जो टीचर्स पढ़ाते थे वो सारा नोट किया, फिर उसको रिवाइज किया. बाकी जो डाउट्स होते थे वो टीचर्स को आप मैं लाइव क्लास के बाद भी पूछ सकते थे हम, और बाकी हम टीचर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्टेड रहते दैट्स ग्रेट ग्रेट बेटा. सो थे. बेटा जब आप थर्ड ईयर में आए तो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी इन थर्ड ईयर, लाइक वी मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इन अ मेडिकल कॉलेज, तो यस सर. how to manage complete all these subjects? Sir, how to manage, sir? Firstly, we have to revise the previous ones, because we should not forget anything. And along with that, we should follow the third year subjects also. It was very hectic, but I managed with the support of faculties, my seniors, and we have to motivate ourselves also sometimes if we feel low. But I managed it, being consistent only. Very true, Beta, very true. So, Yes. but in the third year, now I'm coming like you are writing all the notes on the live platform. Yes, So, sir. what was the role of these live lectures in your success So, journey? live lectures are very beneficial from the recorded lectures, because in live lectures we are interacting with the faculty. Like I can put my doubt at that moment only, and the teacher will clear my doubt. And if I am having any other problem, then after live class also I can interact with the faculty. It's very convenient for us to join a live class. Coming on the MCQ part, Beta, like this Yes, sir. 177 in a very first attempt you Yes, managed sir. to crack. So, what was the strategy for the MCQs when you started? आपने कब start किया? Third year, final year, or after So, final year? MCQs, if I will say honestly, मैंने सर स्टार्ट किया था फोर्थ ईयर से सही से फॉलो करना. ठीक है फिर बेटा. सर पहले मैं क्वेश्चन बैंक्स डैम्स की और जो भी वो फॉलो करता था. फिर टीचर्स ने कहा जब फाइनल ईयर स्टार्ट होगा तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन द PYQs एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स.
And sir, I will suggest everyone that we should not only mug up the PYQs, we should follow the previous year topics, because the straight away the question will not repeat, but the topic will repeat. Topic will be it. Yes, sir. We came with the concept of PYT, कि जो previous year Yes, topics sir. are very important. Yes. But like across the country, across the globe, even आपके college में भी होगा, there is a Yes, phobia sir. कि they are asking very difficult MCQs and Yes, sir. students are running behind multiple sources. Yes, आपने sir. भी, what you realize after giving this examination, MCQ level in FMG with the MCQ level in DQB, what was the comparison? But आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार आपने कुछ मिस किया? नहीं सर, मैंने जो डैम्स ने मुझे प्रिपेयर कराया और जो मैं रियल एग्जाम में बैठा था सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ग्रांड टेस्ट और दे रहा हूँ, बस इससे अलग कुछ भी नहीं था। That's very nice compliment for the क्वेश्चन मेकिंग टीम। एंड बेटा एक चीज मैं Yes, sir. आपसे पूछना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, लाइक काफी बच्चों Yes, को एक sir. फोबिया होता है कि हमने ज्यादा पढ़ना है, हमने काफी पढ़ना है, हमने क्वांटिटेटिव लर्निंग करनी है। अब आप एक, Yes, sir. मतलब यू हैव क्रैक दिस एग्जाम, यू आर द बेस्ट पर्सन टू Yes, sir. टेल अस कि क्या था, मतलब गेम क्या है, ये क्वांटिटी का गेम है ये क्वालिटी का गेम है बेटा ये? सर, ये गेम तो क्वालिटी का ही है। क्वांटिटी के लिए सर हम कहीं से भी कितना भी मैटर गैदर कर लें सर, मेरी यही सजेशन है कि वी हैव टू स्टिक टू द सिंगल सोर्स। तो क्या होता है सर कि जब हम प्रिपरेशन के फेज में, हम जब डिग्री करके इंडिया आते हैं तो लोग सजेस्ट करते हैं इस टीचर से पढ़ लो वो बेस्ट है, इससे पढ़ लो वो बेस्ट है। सर, अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन इज बेस्ट वेरी वेरी नाइस। नाउ इफ वी आर फॉलोइंग देम। यू आर डिजर्विंग दिस सक्सेस बिकॉज आप बिल्कुल ग्राउंडेड बात कर रहे हो कि आप फैकल्टी, यस। फैकल्टी आपके लिए बेस्ट है, बिल्कुल से। एंड आई यस ऑलवेज सर। आई ऑलवेज शेयर विद माय स्टूडेंट्स कि बेस्ट फैकल्टी इज द फैकल्टी हु कंप्लीट द सब्जेक्ट इन मिनिमम टाइम, ताकि यस सर। आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए। तो बेटा फॉर द रिविजन्स। यस। इस सक्सेस में रिवीजन का क्या मतलब, आपका क्या स्ट्रेटजी है और कितनी बार आपने रिवाइज किया? सर, मैंने 3 रिवीजन किए थे सर। मैं जब इंडिया आया था उससे ही पहले मैंने इंटरेक्टिव लाइव कोर्सेज के थ्रू मैंने अपने 19 सब्जेक्ट्स एक बार कर रखे थे सारे। ठीक है बेटा। फिर सर जब मैं इंडिया आया था तो मेरा फर्स्ट रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी थी वो 90 डेज की थी। सेकंड 45 डेज में था। और जो लास्ट में बचे थे डेज उसमें 20 to 25 डेज में मैंने सारा कवर किया था, विद लाइक रैपिड रिवीजन एंड एमसीक्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा लाइक जी सर। आपके फ्रेंड्स हैं वो भी काफी काफी मेनी स्टूडेंट्स दे मस्ट बी गोइंग फॉर द जी सर। क्वांटिटेटिव लर्निंग और काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं, बस मैं यस ये सर। भी पढ़ूंगा ये भी पढ़ूंगा। कहीं आपको ये डर लगा था प्रिपरेशन में कि हाँ यार मैं ओनली एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहा हूँ, कहीं मैं गेम को लूज ना कर जाऊं, ऐसा डर लगा था? जी सर, जी सर, डर लगा था। जब इंडिया आए तो जो लोग पहले से स्टडी पार्टनर्स थे वो अपना होप लूज करने लगे, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भागने लगे। तो एक बार को लगा था कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर जाऊं। बट फिर मैंने जो फैकल्टी से बात की, आप लोगों से शेयर किया, तो फिर एक मोटिवेशन मिली और फिर मैंने ये मान लिया कि एक चीज को फॉलो करूंगा लास्ट तक और सक्सेस यहीं से आएगा। वेरी गुड, वेरी ग्रेट बेटा। एंड नाउ कमिंग ऑन द पेपर लेवल, पेपर वन पेपर टू, बेटा आपने एग्जाम दिया है, आपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल मी व्हाट वाज द लेवल ऑफ द पेपर फर्स्ट बेटा, पेपर वन सर, क्या अकॉर्डिंग टू मी सर, लोग तो अलग कह रहे हैं, मेरा थोड़ा अलग व्यू है इसमें। कि बात सर नहीं? मेरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो था वो मैं क्लिनिकल ज्यादा अच्छा कर लेता था। अच्छा बेटा। लेकिन पेपर वन लाइनर ज्यादा था। हम्म। तो मुझे पेपर वन टफ लगा, पेपर वन क्योंकि आप, पेपर वन पूरा वन लाइनर था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, और सेकंड पेपर क्लिनिकल था तो मुझे वो इजी लगा। वो इजी लगा आपको सेकंड पेपर? तो बेटा सेकंड पेपर में जी। आपको लगा था कहीं ना कहीं, बट बिकॉज एवरीबॉडी सेइंग कि द होल सेकंड पेपर वाज फ्रॉम द नैम्स क्लास नोट्स, तो आपको यस सर, एग्जामिनेशन इट हॉल वाज। में फील आया कि जो नोट्स आप रिवाइज करके आए वो आपको हेल्प कर रहे हैं? हाँ सर, वही मुझे कॉन्फिडेंस इसीलिए सेकंड पेपर में आया, क्योंकि सेकंड पेपर मुझे ऐसा लग रहा था ये सब कहीं ना कहीं देखा हुआ है। बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, थोड़ा सा नर्वस नहीं होना है, चीजें हो जाएंगी। और जी बेटा सर। डीएफएक्स, डीएफएक्स का क्या रोल है इस सक्सेस जर्नी में? सर, डीएफएक्स का मेन रोल, डीएफएक्स का ये है, अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से इंटरेक्टिव क्लासेस में, तो डीएफएक्स ही है जो हमें रिवीजन के टाइम सबसे ज्यादा हेल्प करता है सर। दैट्स ग्रेट बेटा। जी सर। नाउ बेटा कमिंग ऑन द लास्ट सेगमेंट, एनी एनी यस सर। स्पेशल एडवाइस यू वांट टू शेयर विद टू योर जूनियर्स कि यार अगले 6 महीने बाद एग्जाम है, आपको ये करना चाहिए? सर, मेरा जूनियर्स को ये एडवाइस है कि अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो उस पर भरोसा रखो और आप लास्ट तक फॉलो करो। ये नहीं है कि आप ये सोचो ये बेस्ट है वो बेस्ट है, मतलब हमें भागना नहीं होता है कहीं भी चार जगह। और जैसे मैंने डैम्स को फॉलो किया तो मैं लास्ट तक डैम्स को ही फॉलो कर रहा हूँ।
और मैं आगे भी करूंगा, मेरी आगे फर्दर प्रिपरेशन, अगर मैं पीजी के लिए भी प्रिपेयर करता हूँ तो एक सिंगल सोर्स इज द बेस्ट सोर्स। दैट्स ग्रेट एंड वी कॉन्फिडेंट बेटा, आप लोग डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग, बिकॉज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यू क्रॉस 177 इज गुड मार्क्स, गुड स्कोर। तो डेफिनेटली नीट में मोर देन थैंक यू सर। 60% ऑफ द नीट इज प्रिपेयर्ड। अब आपने 2 या 3 बार और रिवाइज करना है, तो आप नीट में भी डेफिनेटली विल बी हैविंग दिस इंटरव्यू ऑन द नीट प्लेटफॉर्म जब नीट का रिजल्ट आएगा। थैंक यू। So, beta, at last, any special message for your parents because of whom you are here? Studied, but due to them only I am here, that I am speaking to you. They gave me this moment. Yes. चलो बेटा, All thanks to them only. हमारी तरफ से भी बेस्ट Thank you, sir. विशेस फॉर देम एंड कांग्रेट्स अगेन फॉर दिस अचीवमेंट। और हम आपको विश करते हैं कि आप नीट में भी बेटा वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में यू गेट योर ड्रीम ब्रांच। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म बेटा। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you so थैंक much, sir. यू। Thank you, sir.